good thing. Another night ruined, I don't even know when we became this way. अस्सलामुअलैकुम, अनदर ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन इस्तांबुल। और आज हम जा रहे हैं प्रिंसेस आइलैंड पे। इधर मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मज़े की बात यह है कि रात पूरी बारिश होती रही है, लेकिन सुबह के वक्त जब मैं उठा हूँ तो बारिश रुकी हुई थी, धूप निकली हुई थी। अभी भी है, बादल तो हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। रात को मुझे यही डाउट था कि सुबह बारिश ना हो और जो प्लान है वो सारा स्पॉइल ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है। The silence is way too loud. Yeah, 'cause I won't be okay without you every day. Baby, don't run away. Baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. Just like me, still instigating things. Fucking up another perfect night when all you ever did was treat me right. Your love and everything that I needed. No, it won't be easy, but darling, please believe me when I say. जी फर्स्ट स्पॉट पे आए हैं और इसका नाम है हे बैली अदा। हे बैली अदा, हे बैली तो जगह का नाम है, अदा कहते हैं आइलैंड को इन टर्किश। नाउ दे विल टेक अस टू समवेयर विच आई डोंट नो। चलते हैं, जाकर देखते हैं, पिक्चर्स कैप्चर करते हैं और मैं आपके लिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेता हूँ। Just having lunch right now with a beautiful view। और अब हम जा रहे हैं प्रिंसेस आइलैंड की तरफ और मैं लंच इंजॉय करता हूँ, आप तब तक व्यू इंजॉय करें। यहाँ पे जितनी भी जो बाइक्स हैं और गाड़ियाँ हैं वो सारी की सारी सस्ती तो हैं। किस पे हैं? इलेक्ट्रिक हैं। एक लॉन्ग को ढूंढ रहा हूँ और मिल नहीं रहा। ये कैसा? नहीं ये अच्छा है। ब्रदर कम, this how much? He is asking 280 and I am saying 200। पाकिस्तानी हूँ, बार्गेनिंग स्किल्स हैं। अब यहाँ पे कितने स्किल्स वो चलते हैं देखते हैं। सो कोशिश करूँगा 200 तक मिले। कोट तो मुझे काफ़ी पसंद आया। ये वाली बात करना थोड़ी सी। Just 1 minute। This you I good Pakistan बॉलीवुड में हैप्पी एंडिंग उसी देता रहा हूं। हैप्पी एंडिंग के पास यार 245 चले आ रहे हैं। पिछली बार में 200 रुपए लेकिन वो इसका जमाना नहीं था, महंगा हो गया था। ओके बात और अच्छा सब करना एंड हैप्पी एंडिंग और कर देना यार 230 हां 235 यार की करना 235 हैप्पी एंडिंग लो तो चल यार खाना
हैप्पी एंडिंग ओके अगर सच्ची बात करूँ तो प्रिंसेस आइलैंड पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। मज़ा जो आया वो इस क्रूज़ का आया है कि लास्ट टाइम जब था मैं वो शिप जो थी वो छोटी थी और इस शिप में मज़ा बहुत आया। और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि आज धूप बड़ी मज़े की निकली हुई है और धूप साथ इतना अच्छा व्यू। अभी जस्ट इस्तांबुल में जहाँ पे हम रहते हैं सुल्तान अहमद के पास पहुँचने ही लगे हैं एंड ऑन माई बैक इट्स ग्लाटा टावर। यहाँ पे मैं गया हूँ इस दफ़ा जाने का अभी तक तो कोई मूड नहीं है। लेट्स सी कि क्या बनता है। काफ़ी मज़ा आया, एक अच्छा दिन था और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में मिली। अच्छी या बुरी बात तो चलो बाद में आ जाती है। नई चीज़ें एक्सप्लोर की हैं इसमें ज़्यादा मज़ा आया और सबसे ज़्यादा जो पर्सनली मुझे मज़ा आया जिस चीज़ की खुशी हुई है वो ये कि धूप निकली हुई है।